So before starting the session, a very happy Mahashivaratri to you all, or a very happy Nyokum festival to you all. Yes, thank you very much. So let's start the class now. So कल हम लोग कहाँ रुके थे? Where we have stopped? We were doing plant mineral nutrition. उसमें हमने nitrogenous fertilizers पे हम we have stopped. Okay. So let me share the screen. Hope everything is clear. My voice, screen, everything. Please give me a thumbs up so that I can understand that everything is clear and we can start the class. Yes, is everything clear? Yes, thank you. Thank you very much. Yes, let's start with this. Again in the soils and plant mineral nutrition, वहीं पे हम लोग हैं. We are going to do. Yes. So कल एक चीज मैं भूल गई थी. आई एम सॉरी. कंपोस्टिंग का जब मैं आज फिर से अपना कंटेंट रिवाइज कर रही थी फॉर क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, प्रिपेयरिंग दैट, सो व्हाइल डूइंग दैट आई नोटिस दैट आई हैव फॉरगॉट टू गिव यू द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग मेथड्स. जो मैंने कल बताया था वो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है. अदर देन दैट देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग. उसके कुछ मेन फीचर्स, ओके, एंड हर एक मेथड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आई हैव मेंशन्ड हियर, ठीक है. एंड इसमें है एडीसीओ प्रोसेस, जो हटचिंसन एंड रिचर्ड्स इंग्लैंड, वहां से उन्होंने ये डेवलप किया था ये मेथड. एक तो है एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस, जो फॉलर एंड रेजी ने किया था डेवलप. एक इंदौर प्रोसेस है बाय हॉवर्ड एंड वैड कंपनी. एक तो है बैंगलोर प्रोसेस बाय CN आचार्य एंड हिज टीम. एंड एक तो है कोयम्बतूर मेथड. नाउ दीज आर द अदर देन द ट्रेडिशनल मेथड, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोस्टिंग मेथड्स. इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. एंड इसमें बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज्यादा कुछ नहीं है. एज यू कैन सी हियर, अगर एडीसीओ प्रोसेस देखेंगे तो इट इज रैपिड एरोबिक कंपोस्टिंग प्रोसेस. मतलब एरोबिक कंडीशंस में ये करते हैं, मतलब ओपन. इसमें इट यूजेस मैकेनिकल टर्निंग एंड एरेशन. सो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट मैकेनिकल टर्निंग, तो इसका मतलब ह्यूज मशीनरी का इनिशियल सेटअप होगा, सो जो कॉस्ट वाला है. इट रिक्वायर्स कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. अगेन एवरीथिंग इज मोस्टली मैकेनाइज्ड. इसका मेजर ये है कि फास्टर कंपोस्टिंग, विद इन फ्यू वीक्स यू विल गेट गुड रिच कंपोस्ट. इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ह्यूमस रिच कंपोस्ट, वेल सूटेड फॉर अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट, जहां पे हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं. इमीडिएटली we require the humus. Major disadvantages: requires machinery for aeration and high initial setup. Likewise, एक तो मैंने इसको बिल्कुल पढ़ के समझाया है. Others also it would be on the same manner. So आप एक बार, I suggest you to go through this. Anyways, I'll be providing you this PDF. तो आप एक बार इसको देख लीजिए. And once you go through this, if you still have any doubts, हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सो आई डोंट वांट टू अगेन गेट इनटू दैट एक्सप्लेनेशन एंड ऑल. एंड इसमें एक चीज मैं हाईलाइट करूंगी. बैंगलोर प्रोसेस जो है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है इंडिया में. इट कैन बी डन इन पिट्स एज इट इज स्पेस सेविंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. एंड लेस लेबर एंड मेंटेनेंस. दो डिकम्पोजिशन बहुत स्लोअर होता है, दिस इज यूज. एंड एक और है कोयम्बतूर मेथड. नाउ दिस इज लिटिल बिट फास्टर व्हेन कंपेयर टू द अदर प्रोसेसेस, कंपोस्टिंग प्रोसेस दैट आर जनरली फॉलोड इन इंडिया. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस टू, क्योंकि इन दोनों के ऊपर लास्ट 2 years में 2-3 बार क्वेश्चंस आए हैं इन द AFO एग्जाम. ओके, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो एग्जाम है उसमें इसी पे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है. ये हो गया. and again I request you all to please go through this table once and let me know if you have any queries. बिल्कुल self explanatory है and very easy language में मैंने इसमें comparison दिया है आपको, ठीक है. hope it is clear. now ये हमने कल किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये भी हमने किया था. वी हैव आल्सो सीन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट द फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस. ये भी क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था. ऑफ विच वी हैव सीन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जो अमोनिकल फॉर्म में या नाइट्रेट फॉर्म में, बोथ अमोनिकल एंड नाइट्रेट फॉर्म, अमाइड फॉर्म में, that also we have seen. And we have also seen that urea is also called as organic fertilizer, right? Generally artificial है तो we always call it as inorganic, right? But this is called as organic because of its high nitrogen content in it and the kind of usage that
वी हैव विद दैट. सो इसके साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स भी दे दिया है हर एक इसका. एंड अगेन एज आई एम सेइंग इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू इज द नाइट्रोजन कंटेंट जो इसमें है एंड विच काइंड ऑफ सॉइल्स इट इज मोस्टली यूज. लाइक अगर इसमें देखेंगे तो अमोनिकल फॉर्म, these kind of fertilizers, nitrogenous fertilizers are very much suitable for waterlogged conditions. Waterlogged conditions generally acidic. Okay, so this is acidic in nature. So इस तरह से अलग अलग इसमें किस तरह से यूज होता है दैट आई हैव मेंशन्ड. तो एक बार आप प्लीज इसको देख लीजिए एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स विल डिस्कस. यूरिया का भी हमने देख लिया है कल. That top dressing, foliar spray, sowing, all that we are using, and we have also discussed about nitrogen use efficiency where it is very less currently, and in order to improve that, why? Because of urea nitrification. One second. Urea nitrogen nitrification ke through it escapes, right, or it leaches into the groundwater. So these are one few of the reasons why the nitrogen use efficiency of urea is very less, and for which we have to use nitrification inhibitors. Now nitrification inhibitors कई तरह से chemicals भी है, natural भी है. chemicals में क्या क्या है examples? Nitropyrin, dicyanamide, ammonium thiamide, ये सारे हैं. One second. Thiosulfate, sorry. Okay, examples very important. But we have found that using neem oil or the neem cake powder coating on urea has been the one of the most effective alternatives other than these costly chemicals which are not affordable by the Indian farmer. ठीक है. सो नीम कोटेड यूरिया कैसे बनाते हैं दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस की. पहले एक टार का कोटिंग देते हैं, उसके बाद ये पाउडर्ड इसमें जो केक पाउडर है उसमें उसको रोल करते हैं. देयर बाय it gets attached to that and neem coated urea can be made with that. Okay, hope यहाँ तक तो हमने पूरा डिस्कस किया था एंड आई होप इट्स रियली क्लियर. कुछ डाउट्स है तो प्लीज यू कैन आस्क मी. नेक्स्ट आता है हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, दैट इज फॉस्फरस. फॉस्फरस वाले में 3 तरह के फर्टिलाइजर्स यू कैन फाइंड. वन इज अ वाटर सॉल्युबल फॉस्फरस फर्टिलाइजर्स एंड अदर इज सिट्रिक एसिड सॉल्युबल एंड द थर्ड वन इज द इनसॉल्युबल. ये जनरली पाउडर्ड फॉर्म में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी दोनों एज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक है. एंड इसमें अगेन एज यू कैन सी हियर व्हेन देयर आर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, ये हमने डिस्कस किया था. कॉम्प्लेक्स में क्या है? देयर विल बी सम कंपाउंड फॉर्म एंड इसमें 2 और मोर देन 2 न्यूट्रिएंट्स कैन बी प्रोवाइडेड. बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे डाईअमोनियम सल्फेट, सॉरी डाईअमोनियम फॉस्फेट. इसमें नाइट्रोजन भी है एंड फॉस्फरस भी है. सो मेनी ए टाइम्स हैपेंस दैट फार्मर्स अगर एक साथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस भी उनको देना है अपने क्रॉप्स को, देन दे कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स. इसमें के मोनो अमोनियम फॉस्फेट, डाईअमोनियम में थोड़ा सा नाइट्रोजन परसेंटेज ज्यादा रहता है एंड मोनो अमोनियम में थोड़ा कम रहता है, फॉस्फरस यहाँ पे ज्यादा है. Likewise, as you can see, important features and for which kind of crops it is useful that I have mentioned here. So again I am saying self explanatory है and एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए. Okay, though I am highlighting the most important ones in the class itself. Next आते हैं potassic fertilizers. When we talk about fertilizers, NPK, the most important of all, not to the plants. इसके अलावा और भी fertilizers है which I have mentioned. We'll go through in the coming slides. Now when we talk about potassic fertilizer, सबसे important है 2 तरह के, एक तो म्यूरेट ऑफ पोटैश एंड एक तो है सल्फेट ऑफ पोटैश. म्यूरेट ऑफ पोटैश में क्लोरीन भी रहता है, hence this fertilizer is made for acidic and heavy soils but not for alkaline soils because alkalinity फिर वो बढ़ा देगा. और ओके एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जब भी क्लोरीन के साथ हम लोग कुछ fertilizers use कर रहे हैं, then that would not be suitable for crops where quality is of major consideration like your tobacco, potato etc. इनके लिए we'll go for sulfate of potash. ओके जिसमें पोटेशियम के साथ साथ सल्फर भी थोड़ा मिल जाता है. प्रिफर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक दिस वेयर क्वालिटी इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. उसके बाद एक और आता है पोटेशियम नाइट्रेट जिसमें सॉल्ट, इट्स ऑल्सो नोन एज सॉल्टपीटर और नाइटर. इट इज एक्सेलेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम एज वेल एज नाइट्रोजन एंड जनरली ये भी हाई क्वालिटी का होता है एंड इट इज यूज फॉर फ्रूट ट्रीज, टोबैको, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. वाई आई एम हाईलाइटिंग बिकॉज इसमें A4 जैसे एग्जाम्स में एक आधे क्वेश्चंस हर बार आते हैं.
Okay, now when we talk about the other secondary minerals like calcium, magnesium, sulfur, उनके different fertilizers में the amount of calcium, magnesium, sulfur and others that are present, I have highlighted this. Again ये self explanatory है, एक बार आपको देख के you have to learn कि कौन से इसमें fertilizer में कितना कंपोनेंट है. एंड कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट लिटरेचर्स में डिफरेंट कॉम्पोजिशन, मतलब कॉम्पोजिशन रहेगा, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कैल्शियम नाइट्रेट, नाउ कैल्शियम नाइट्रेट में दे से दैट कैल्शियम भी है, ओके, एंड अदर्स कुछ दिखाया नहीं है, अगर कुछ होगा तो दैट वुड बी वेरी मीगर अमाउंट, दैट्स द रीजन दे माइट नॉट हैव मेंशन्ड हियर. एंड जिप्सम, ओके, जिप्सम में कैल्शियम भी है 29.2% एंड सल्फर है 18.6%. माइट भी दूसरे लिटरेचर में आपको दिखेगा 30.4% और सो, और यहाँ पे 18.2% ऐसे, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लस और माइनस 2 to 3% रहता है. सो डोंट वरी, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो विच एवर इज द नियरेस्ट फिगर ऑन एन एवरेज वो आप चूज कर सकते हैं. वहां पे एग्जामिनर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है. डोंट वरी कि 29.2 29.4 देगा क्या, ऐसे नहीं देगा वो, ठीक है. तो आप देख के वेरी इजीली यू कैन पिक आउट द आंसर. सो डोंट वरी, लिटरेचर टू लिटरेचर ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मेथड्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ दैट न्यूट्रिएंट कंटेंट. होप आई एम क्लियर हियर. सो ये मत सोचे कि मैम ने तो एक टेबल दिखाया वहां तो बिल्कुल डिफरेंट है कुछ. सो प्लस और माइनस 2 to 3% बिल्कुल रीजनेबल है. सो ये हो गया हमारा टेबल फॉर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर कंटेंट्स. ये हो गया हमारा सोर्सेस ऑफ कॉपर, अदर एलिमेंट्स जो है न्यूट्रिएंट्स उसका भी मैंने यहाँ पे दे दिया है. दीज आर द सोर्सेस ऑफ जिंक, दीज आर द सोर्सेस ऑफ मैंगनीज, okay, and this is the optimum time of application of nitrogen for different crops. किस टाइम पे नाइट्रोजन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट आई हैव मेंशन्ड हियर. यू अगेन ऑल दीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि अगर कॉपर सल्फेट है तो सोर्स उसका उसमें कॉपर 21% मिलेगा, अगर जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 35% जिंक, उस तरह से आपको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले में कभी क्वेश्चंस नहीं आए, नॉट इन द अरुणाचल प्रदेश एडीओ एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स. क्वेश्चंस नहीं आए बट स्टिल आई मेक श्योर दैट कि एक बार आप देख लेंगे तो अगर कुछ आएगा भी तो दैट वुड बी इन द बैक ऑफ योर माइंड कि हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, एटलीस्ट अटेम्प्ट करने का एक चांस मिल जाएगा. सो प्लीज एक बार देख लीजिए, नथिंग फैंसी, नथिंग डिफिकल्ट, बट एक बार देखेंगे तो आपको एक आइडिया तो रहेगा, ठीक है. एंड ये टेबल आप जब हम लोग टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करेंगे ना उसके बाद ये टेबल देख लीजिए. आई शुड हैव गिवन इट देयर, सॉरी मैं फोटोज के साथ वो एक साथ डाल दी. सो देन इट वुड बी इजी फॉर यू. लाइक राइस हो गया, बेसल एप्लीकेशन, ओके, इमीडिएटली आफ्टर सोइंग, टिलरिंग जब होगा उसके बाद, पैनिकल इनिशिएशन टाइम पे, ये 3 टाइम्स में नाइट्रोजन देना जरूरी है. एंड सॉर्गम के लिए बेसल एप्लीकेशन एंड पैनिकल इनिशिएशन. पर्ल मिलेट के लिए अगेन बेसल पीआई, फिंगर मिलेट के लिए बेसल, टिलरिंग एंड पीआई, सिमिलर टू राइस. सो राइस एंड फिंगर मिलेट सिमिलर आपको नाइट्रोजन देना पड़ेगा. वीट के लिए बेसल, क्राउन रूट इनिशिएशन सीआरए वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट, एंड पीआई. ग्राउंडनट एंड पल्सेस के लिए एक बेसल देंगे तो चलेगा. व्हाई? बिकॉज दे इटसेल्फ दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन, नो, सो उनके लिए अलग से देने की जरूरत नहीं है. बट फर्स्ट फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट एज सच, द प्लांट एस्टेब्लिशमेंट दे हैव टू गिव, तो वो देना पड़ेगा. एंड शुगर केन के लिए 60, 90, 120 डेज ऑफ प्लांटिंग दे हैव टू गिव, अलॉन्ग विद पोटेशियम भी उनको हाई देना पड़ेगा. एंड वाई वी हैव सीन C4 प्लांट है उसमें डबल एक्स्ट्रा फोटोसिंथेसिस होगा, एंड फॉर विच पोटेशियम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल. एंड नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत. सी व्हेन वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि कई बार कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं दैट विल इंक्रीज द acidity or alkalinity in the soils, right? So यहाँ पे for example यहाँ दिया है acid equivalent of acid forming fertilizers, for example ammonium chloride. So ammonium chloride का acid equivalent है 128. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि see if we add 100 kg of ammonium chloride to the crop, so it will increase that much acidity. और उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट एसिडिटी न्यूट्रलाइजर? इट इज कैल्शियम कार्बोनेट. सो दे हैव टू ऐड 128 kgs ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज दैट एसिडिटी.
Okay, that is called as acid equivalent. So here these are the acid equivalents of some of the acid forming fertilizers. ये तो acidic soils के लिए बिल्कुल यूज ही नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट आता है इक्वलेंट बेसिसिटी ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर्स विच इंक्रीज द बेसिसिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल्स. सो सिंपलर, यहाँ सोडियम नाइट्रेट है, सो व्हेन वी ऐड सोडियम नाइट्रेट इट इंक्रीजेस एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल, एंड इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दैट, फॉर एग्जांपल 100 kg ऑफ सोडियम नाइट्रेट अगर ऐड कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द alkalinity that is generated by this sodium nitrate, we have to add 29 kg of the best alkaline neutralizer. कौन सा है? gypsum. Okay, calcium sulfate dihydrate. So okay, gypsum would be added, 29 kgs of gypsum should be added to neutralize that. So simple, ये acid equivalents and ये basic equivalents for each of them. So please ये भी एक बार देख लीजिए. As I've said, ammonium sulfate, so for every 100 kg of ammonium sulfate, 110 kg of calcium carbonate should be added. So ammonium sulfate nitrate, for every 100 kg of ammonium sulfate nitrate, to neutralize the acidity that it generates, you have to add 93 kg of calcium carbonate. Okay, similarly is with the case with the basicity. यहाँ पे calcium carbonate add कर रहे हैं, and even any other acid neutralizers, and here gypsum. Why? Because I'm highlighting only these two, because these are one of the easily available for the farmers and very cheaply available. इसीलिए these are some of the best neutralizers that can be added. Okay, hope it is clear. Now इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, but I would like you to go through these content once. See, phosphorus का content, how you'll determine in a fertilizer, or nitrogen का, or potassium, or organic carbon, there are various methods. We are not going into those methods because वो MSc agriculture के लिए useful रहेंगे जो soil science करते हैं. Here just you need to understand that there are methods that are used to determine the presence of phosphorus and the availability of phosphorus कितना percentage in a particular fertilizer. Methods आप बिल्कुल याद रखिए. जैसे phosphorus, उसके लिए Olsen method is used. This is used for alkaline soils when soil testing is done, and brace method is used for acidic soils. इतना काफी है अभी के लिए हमें. And why I have given all this, because इसके ऊपर एक question आया था, and I think yes, this one or this one, हाँ, इसके ऊपर एक question आया था in the recent times in agriculture related competitive examinations. See, ठीक है? So I have given all the whatever that is most important for you. So phosphorus is determined by two methods. एक तो Olsen method alkaline soils के लिए, brace method acidic soils के लिए. Available nitrogen is determined by alkaline permanganate method. Potassium is determined by flame photometer or ammonium acetate method. Organic carbon is determined by Walk and Black method and Morgan method. Sorry, मैं starting में fertilizers का बोल रही थी. This is for soil testing. I'm really sorry. I was not talking about some other method which is actually not required here. Okay, ये जब करेंगे तो these are the methods with which we'll see the presence and the amount of the available nutrients in the soil. ठीक है? Hope it is clear. Now, before going any further, कुछ terminology है that you have to understand. First is fertilizer grade. Now, fertilizer grade क्या है? It refers to the guaranteed minimum percentage of NPK that is contained in a fertilizer material. We see, that इसमें 20% नाइट्रोजन है, 30% जैसे हमने अभी न्यूट्रिएंट कंटेंट का देखा है, राइट? दोज आर द फर्टिलाइजर ग्रेड्स जो अभी तक हमने देखा है हर एक इसका. वी हैव सीन दैट न्यूट्रिएंट कंटेंट परसेंटेज, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैंगनीज, जिंक एंड ऑल दैट वॉट एवर. बट फर्टिलाइजर ग्रेड इट्स सेम गारंटीड मिनिमम परसेंटेज ऑफ, जनरली एनपीके फर्टिलाइजर्स के लिए ये यूज होता है. ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर रेशियो. Now this is the ratio of the percentage of NPK of the fertilizer mixture. So अगर वहाँ पे percentage या 20, 30, 40 ऐसा कुछ है, उसका रेशियो जो हम निकालेंगे ना, that would be the fertilizer ratio. Simple percentage का ही हम लोग रेशियो निकालते हैं. ठीक है? नेक्स्ट आता है कंडीशनर. नाउ कई बार ऐसा होता है कि लाइक यूरिया है, इट इज वे हाईली हाइग्रोस्कोपिक, और अमोनियम नाइट्रेट वो भी हाइग्रोस्कोपिक होता है. कई सारे
it's not that only those two, there are various other fertilizers which are hygroscopic. So in order to जब spread जब apply करेंगे थोड़ा सा दिक्कत होती है because of all this. So for which low grade organic materials like your peat soil, paddy hulls, groundnut hulls, etc., they are mixed with the fertilizer to reduce that hygroscopicity and also to improve the physical conditions by which that can be applied to the crops. ठीक है, those are called as, these are generally inert materials, उसमें कुछ भी क्या बोलते हैं compound forming वाला factor नहीं रहेगा. That's the reason we are easily adding them and utilizing them. So those are called as conditioners. नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजर्स ऑफ रेसिडुअल एसिडिटी. अभी पहले हमने देखा है एसिडिक एसिड इक्विवेलेंट, बेसिक इक्विवेलेंट, वो एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए विल ऐड रेस्पेक्टिव acid regulators and all that reducers, right? So materials like dolomite, limestone, etc. are added to fertilizer mixture to counteract the acidity of the nitrogenous fertilizers, be it acidity or basicity को, based on the acid equivalent or basic equivalent. When that added, those filler, those materials are called as neutralizers or of residual acidity और न्यूट्रलाइजर्स ऑफ रेसिडुअल एल्कलिनिटी. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फिलर्स. सो कई बार हमारे पास डिजायर्ड ग्रेड या फिर डिजायर्ड रेशियो वाले फर्टिलाइजर्स नहीं मिलेंगे. देखिए हमें चाहिए 1:1 और 1:0:1 ऐसे कुछ चाहिए, बट वी हैव समथिंग एल्स. सो उसको हम लोग उसका रेशियो डाउन लाने के लिए अप टू व्हाट दैट इज रिक्वायर्ड बाय अस, वी कैन यूज फिलर्स like sand, soil, coal powder, etc., which are again inert material, so that we can bring down the mixture to our desired grade. जो grade हमें चाहिए, अगर 2 है तो हमें 1 चाहिए, तो उसमें आधा आप fillers यूज कर लीजिए and you can apply. So already 1 ratio पे आ गया है वो जो grade हमें चाहिए. So likewise fillers can be used, and these again are inert materials which do not have any say in compound forming factors. Okay, conditioners and fillers both inert materials ही होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अभी हमारा है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, PGPR. Now what is this PGPR? This comes under biofertilizers. Now these are the group of bacteria that generally colonize or they stay in the rhizosphere soil, that is where the roots are there, and benefit the plant by providing them with some plant growth promoting material. वो मटेरियल क्या है, कोई नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, कोई फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, कोई पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं, ऑल दैट. सो विल बी डूइंग दैट इन द कमिंग स्लाइड्स. Okay, those all put together they are called as plant growth promoting rhizobacteria. ठीक है, for example यहाँ पे मैंने सूडोमोनास का दिया है. Now when we talk about this plant growth promoting rhizobacteria, इसमें कई types के हैं, like your some help in suppressing the plant diseases which are termed as bioprotectants. ठीक है, some helps in improving the nutrient acquisition which are called as biofertilizers. इसमें हम लोग बायोफर्टिलाइजर्स का ही करने वाले हैं. बायोप्रोटेक्टेंट्स का कहाँ करेंगे हम लोग, व्हेन वी डू पैथोलॉजी, ओके, प्लांट पैथोलॉजी, वहाँ पे एक बार इनका देख लेंगे. बायोपेस्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स एंड वीड्स का जब करेंगे तो बायो हर्बिसाइड्स, क्योंकि इसमें बायोप्रोटेक्टेंट्स में आगे 3 टाइप्स है. बायो इंसेक्टिसाइड्स फॉर कंट्रोलिंग द इंसेक्ट्स नेचुरली, बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स जो है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, एंड थर्ड वन है हर्बिसाइड्स जो वीड्स के लिए. ठीक है, ये हम लोग रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में डिटेलली करेंगे. अदरवाइज यहाँ पे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सेपरेशन ऑफ प्लांट डिजीज दैट ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोप्रोटेक्टेंट्स अंडर द प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया. नेक्स्ट आता है एज वी हैव सीन बायोफर्टिलाइजर्स और फाइटोहार्मोन प्रोडक्शन. दीज आर कॉल्ड एज बायोस्टिमुलेंट्स. ये हम लोग कहाँ करेंगे, जब फाइटोहार्मोन्स का चैप्टर करेंगे, ऑक्सिन्स एंड ऑल दैट, उसमें हम लोग ये बायोस्टिमुलेंट्स का एक छोटा सा टॉपिक कर लेंगे. ठीक है, सो नाउ विल मूव टू द बायोफर्टिलाइजर्स. एक छोटा सा फोटोग्राफ है, हाउ दे इम्पैक्ट ओके द प्लांट
growth, this plant growth promoting rhizobacteria, ये है. एंड मूविंग ऑन टू आवर बायो फर्टिलाइजर. सो बायो फर्टिलाइजर्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स. सो इसमें अगेन तरह तरह से है, लाइक योर फ्री लिविंग, मतलब दे आर फ्री लिविंग इन द सॉइल. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, sorry, just give me a second. Okay, sorry. Yes, एक मैसेज आ रहा था, आई वाज रेस्पॉन्डिंग. Yes, nitrogen fixing biofertilizer. सबसे पहले free living है. These do not have any association with the plant in any manner, but yes, they fix the atmospheric nitrogen in the soil that would be utilized by the plants for their growth. For example, azotobacter, 𝐬𝐴𝐺, Clostridium, Klebsiella, Anabaena, nostoc, etc. ठीक है. Symbiotic. Now here they reside in the plant body. उनसे shelter ये nutrition लेते हैं plant से. In turn, they will provide the, they'll fix the nitrogen and that would be made available to the plants directly. लाइक योर राइजोबियम लेग्यूम्स में फ्रैंकिया, एनाबिना, एजोले, ये जनरली राइस में ये बहुत यूज होता है. ओके, बिकॉज दे नीड दैट स्टैंडिंग वाटर. थर्ड आता है हमारा एसोसिएटिव सिम्बायोटिक. इसमें क्या है, डायरेक्ट प्लांट के अंदर जाके वो रिसाइड नहीं करते एज सिम्बायोटिक, बट दे विल बी इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द plants, thereby fixing the nitrogen and providing. एक म्यूचुअलिज्म टाइप का ही है, बट यू कांट से कंप्लीटली इधर म्यूचुअलिज्म और कंप्लीटली सिम्बायोटिक. दे विल बी क्लोजली associated with that but not complete in contact with them. ठीक है. So ये तीन टाइप के हैं. Examples are very very important here. Now when we talk about few important points associated with the nitrogen fixing biofertilizers, the first rhizobium inoculant was first made in USA and it was commercialized by private enterprises in 1930s. and उसका जो क्या बोलते हैं, एक नोट्स या फिर लेजर जो बनाया है, दैट वाज क्रॉनिकल्ड बाय फ्रेड इन 1932. सो ये फर्स्ट इंस्टेंट है जहाँ पे हमने राइजोबियम इनोक्यूलेंट्स यूज किए हैं आर्टिफिशियली. उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर्स, उसमें अजिटोबैक्टर क्रोकोकम, ये है वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट इनहैबिटेंट इन एरेबल सॉइल, जहाँ पे भी व्हाट यूल से एरेबल, जहाँ पे भी हम लोग टाइम एंड अगेन टिलेज प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं. ठीक है. So it is capable of fixing nitrogen. 2 to 15 mg of nitrogen is fixed per 1 gram of carbon source in culture media. But otherwise arable soils में सबसे high है. And if we look at the उनका एक lab में check किया तो this is what they have found. Important again. Now azospirillum and 𝗏𝗶𝗃, resilience, amazonens, halopreferens and irrigans, these are primary inhabitants of soil and the rhizosphere, that is in the root areas. And yes, 1 second, yes. And in the intercellular spaces of the root cortex of the gramineous plants, and that is associative symbiotic relationship, and they fix the nitrogen. So they perform the associative symbiotic relation with the gramineous plants generally, and they promote the growth promoting substance production, IAA. Okay, that indolestic acid, that is the chemical name. Disease resistance and also drought tolerance, these are the additional benefits by the presence of this azospirillum. Not only nitrogen fixation, they help in phytohormone production, in providing disease resistance to the plants as well as drought resistance. ठीक है.
ये हो गया बिकॉज दे हैव दैट नो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो इंक्रीज कर देता है सॉइल्स में जहाँ पे भी अजोस्पाइरिलम ज्यादा रहता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है अजोला। इट इज ए फ्री फ्लोटिंग वाटर फंड, जैसे मैंने बताया है, दैट फ्लोट्स इन वाटर एंड फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन and it is in symbiotic association with the nitrogen fixing blue green algae Anabaena azole. Very very important. Since it requires water, it is generally used in wetland rice, जहाँ पे standing water में rice grow किया जाता है, wherein it can contribute 40 to 60 kg of nitrogen per hectare per rice crop, that is per season. सी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने ऑलरेडी बोल्ड में हाईलाइट किया है व्हेन आई प्रोवाइड यू विद द डॉक्यूमेंट। आप जस्ट रिवीजन के लिए ये बोल्ड वाले भी देखेंगे तो चलेगा, ठीक है। Now these are some of the rhizobium species suitable for different crops. Very important again for you for nitrogen fixing. So जैसे कि rhizobium leguminosarum, this is very much suitable for peas, lathyrus, vishya and lentil. Tripoli, it is very much suitable for berseem. अगर inoculation अलग से करना है तो definitely these are some of those that can be useful, और नेचुरली अगर है तो और भी अच्छा है। देयर इज नो नीड फॉर एनी आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन। अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक बार प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एवरेज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय वेरियस लेग्यूम्स? सबसे ज्यादा फिक्सेशन होता है अल्फा अल्फा ल्यूसन। यू नो वन मोर इम्पोर्टेंस ऑफ अल्फा अल्फा, anyone tell me one more importance of alpha alpha crop that is generally introduced into the crop rotation? crop rotation में ये बहुत यूज होता है, स्पेशली इन दोज एरियाज जहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर सही से नहीं है, स्पेशली दैट फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब बिल्कुल हार्ड पैंस या फिर डेप्थ में दिक्कत है एंड ऑल दैट। इन सच केसेस इन क्रॉप रोटेशन दे इंट्रोड्यूस और दे यूज अल्फा अल्फा। Anyone, any idea why? No idea? एक सेकेंड, ओके मैं बता देती हूँ। सी दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स डीप रूट सिस्टम। ये रूट सिस्टम बिल्कुल जो भी हार्ड नेचर है या फिजिकल सॉइल स्ट्रक्चर डैमेज है उसको बिल्कुल सुधार देता है along with nitrogen fixation, so win-win situation. ओके सो डीप रूटेड क्रॉप्स में वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आपको पूछेंगे तो यू कैन गिव अल्फा अल्फा, ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द सॉइल स्ट्रक्चर along with soil fertility. So जहाँ पे भी soil fertility के साथ साथ soil structure को improve करना है, there the farmer can go for alpha alpha, ठीक है। and as usual alpha alpha leucine, it is very good livestock fodder. इसके बाद लैडिनो क्लोवर, स्वीट क्लोवर, रेड क्लोवर, वेरियस टाइप्स ऑफ अगेन फॉडर्स ओनली। ये सारे इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत हाई रहता है, सबसे हाई तो अल्फा अल्फा में होता है। इफ यू लुक एट द रेगुलर लेग्यूमिनस क्रॉप्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, ग्राउंडनट में एज यू कैन सी हियर 27 to 206 kg per hectare. So you must be wondering इतना वेरिएशन क्यों? Why? Because of the kind of variety of groundnut that is used, the kind of soil in which they are growing and the kind of climatic conditions that are prevailing in that area, ये variation आता है, okay? So Bengal gram का दिया है and all that, black gram का सबसे ज़्यादा रहता है, okay? And it is one of the most sought after crop rotation या intercropping crop in northeastern areas. राइस के साथ ये बहुत चलता है। इवन रिले क्रॉपिंग में ब्लैक ग्राम बहुत यूज होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। जब हम लोग क्रॉप सॉइल्स में एक टॉपिक है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड्स, उसमें एग्रीकल्चरल मेथड्स एंड इंजीनियरिंग मेथड्स करके कई सारे मेथड्स हैं। उसमें जो एग्रीकल्चरल मेथड्स है उसमें इंटरक्रॉपिंग आता है एंड देयर विल बी स्टडीइंग अबाउट दिस combination of paddy and black gram. We'll look into the relay cropping. Relay cropping I think will also do in cropping systems. जब cropping systems करेंगे उसमें भी relay cropping आता है, ठीक है। There will discuss more, but here try to understand
the quantity of nitrogen that is fixed by different leguminous crops kg per hectare, as you can see here. नेक्स्ट आता है बायोफर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन का हो गया हमारा. अब आता है फॉस्फरस सॉल्युबलाइजिंग एंड फॉस्फरस मोबिलाइजिंग. नाउ फॉस्फरस सॉल्युबलाइजिंग, सॉरी, यस, फॉस्फरस सॉल्युबलाइजिंग क्या है? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट जो अनअवेलेबल फॉस्फरस है दैट वुड बी that would be made available to the plant by solubilizing that, thereby making it available to the plants. By bacteria में ये examples है bacillus species and pseudomonas species, fungi में penicillium species and aspergillus. ठीक है. Now these bacillus, penicillium, aspergillus, they secrete organic acid. How they are going to do that? Phosphorus solubilization. Let's have a look. They secrete organic acids and lower the pH in their vicinity. Acidity मतलब pH कम होगा. And जब भी acidity होती है soils में, phosphorus जो भी bound phosphates है किसी और compound form में, that would be released. वो ब्रेक हो जाता है, देयर बाय मेकिंग इट अवेलेबल टू द प्लांट्स. हमने देखा है ना स्टार्टिंग में जब न्यूट्रिएंट्स का कर रहे थे, उसमें हमने देखा था कि हाउ the increasing in acidity will lead to the availability of more phosphorus to the plants. The same they'll do, but in a very natural manner. Okay, so this will help the unavailable phosphates made available to the plants. And here that एक study भी हुआ था. Increased yields of wheat and potato were demonstrated due to inoculation of peat-based cultures of Bacillus polymyx and Pseudomonas striata. Very very important. ये as per study. ये कहाँ का study है? ये I have tried but I couldn't get. But this they have mentioned in lot of literature. कई जगह पे ये mentioned है. ठीक है. ये हो गया phosphorus solubilizing, just help in that solubilizing, thereby making it available to the plants. Mobilizing क्या है? They help. जैसे ये mycorrhiza है, okay, mycorrhiza मतलब क्या है? Strand like fungi, right? वो strands के through whatever that is there, the phosphorus that will help, okay, for the एक they'll act as a bridge की तरह एक्ट करते हैं and help the plant to absorb this phosphorus from the soil. So the transfer of nutrients, mainly phosphorus and also zinc and sulfur, from the soil to the cells of the root cortex is done by intracellular obligate fungal endosymbionts. That is, they live inside the plant, though they are fungal, completely dependent नहीं रहते. They're obligate endosymbionts. That's the reason symbionts, parasites नहीं है, because though they derive nutrition and shelter from the plants, they also provide this phosphorus to them. Phosphorus, zinc, sulfur, जो भी unavailable forms में है, they'll convert that into available forms and help the plant to absorb them through their mycorrhiza or that cellular strands. जो बिल्कुल mycorrhiza मतलब वही है ना जो strands होते हैं. So genera include glomus, gigaspora, acolospora, sclerocyst, etc. ठीक है, which possess vesicles for storage of the nutrients in their cells and arbuscles for funneling these nutrients. Vesicles क्या है आपके? एक vacuoles टाइप के होते हैं, इसमें वो सारा nutrients को store करते हैं. And arbuscles, इसके strands type. Okay, these strands will attach to the root cortex. Root cortex के जो cells हैं, जो root hairs में होते हैं, to that they'll attach, and whatever the nutrients that they are storing here, they're mobilized from here. They will travel through these arbuscles and reach these root cortex cells, thereby the plant can absorb. That's how they are mobilizing phosphorus, sometimes zinc and sometimes sulfur to the plants. Hope it is clear. Into the root system. And सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो soil में glomus is the one with several of its species available in the soil, most commonest genus that is present in the soil that help in mobilizing the phosphorus. Okay, next आता है हमारा various other micronutrient biofertilizers. Here example आता है silicate and zinc solubilizers. The name itself suggests they solubilize zinc in the soil, thereby making it available to the plants. So here studies which have been conducted with a bacillus species isolated from the soil of granite crusher yard
वहां से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, एंड दे हैव सीन दैट this bacterium is capable of dissolving several silicate minerals under in vitro condition. So what they have done, ये तो lab में हुआ था. After that what they have done, that they have added this to the paddy crop. Paddy में जब they have added, see it responded well to application of organic siliceous residues like rice straw, rice husk and black ash at the rate of 5 tons per hectare. जब add करके उसमें ये bacillus species उन्होंने release किया है, they have seen that it has resulted in increased plant growth and grain yield. Why? Because of this bacillus species, the enhancement this happened जो plant growth या grain yield because of the increased availability of silica and nutrients from the soil. So with this experiment they understood that okay, silicates या zinc solubilizers के लिए bacillus species is one of the best. ठीक है, and this they have done scientifically also on the in the field. So ये हो गया हमारा biofertilizers for micronutrients. Now when we talk about these biofertilizers, वो दो तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं. फर्स्ट सीड ट्रीटमेंट में, एंड आफ्टर दैट इन द डायरेक्टली क्रॉप में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सीड ट्रीटमेंट में व्हाई? बिकॉज इट इज अ मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का, जैसे फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग, एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज कर सकते हैं. नो, वी कैन यूज फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग, सॉल्युबलाइजिंग या जिंक वाले, और सिलिका अगर पैडी है तो उस तरह से एज पर द रिक्वायरमेंट दे कैन गो फॉर यूसेज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इनोकुलेंट्स एट वन गो. thereby उनका जो the number of these organisms they can increase in the soil, thereby naturally वो support करे complete plant growth को. ठीक है. so here सीड ट्रीटमेंट में दो तरीके से हो सकता है, as you can see here. For small quantity the coating can be done in a plastic bag after mixing. see उसमें मिक्स कर सकते हैं, you know, पहले वॉश करके अच्छे से, एंड आफ्टर दैट द पाउडर्ड फॉर्म इट कैन बी पुट इन दिस, एंड एक गनी बैग में लेके अच्छे से व्हाट यू विल से दे शेक इट एंड शेड ड्राइड करना जरूरी है. सी आफ्टर मिक्सिंग ये 5 kg क्वांटिटी तक इस तरह से बैग में कर सकते हैं. सो शेड ड्राइड 20 to 30 minutes. नाउ दे कैन बी they can go for sowing. अगर लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स है, सो दैट कैन बी यूज इन ए बकेट और सीड ड्रेसिंग ड्रम. ऐसे सीड ड्रेसिंग ड्रम होता है, इसमें सीड्स और वो पाउडर डाल के मिक्स घुमाते रहते हैं, देयर बाय दे गेट कोटेड प्रॉपरली. लार्ज क्वांटिटी से तो ऐसे बैग में नहीं कर सकते हैं ना, सो दिस वुड बी द मोस्ट फीजिबल मेथड. सो सीड ट्रीटमेंट विथ राइजोबियम, एस्ट्रोबैक्टर, एज़ोस्पायरिलम along with phosphorus solubilizing mycorrhizae can be done. The seed treatment can be done with any 2 or more bacteria. ज़्यादा भी हम लोग कर सकते हैं. And generally why? Because there is no antagonistic effect, that is कोई side effect generally होता नहीं है. They don't interfere with each other's life cycle. So आराम से हो जाता है and we'll get the best results. And this method will provide maximum number of each bacteria required for best results. Okay, when each seed layer get a layer of above bacteria, then PSM inoculant has to be coated as the outer layer. सबसे last में PSM होना चाहिए. That will help a lot in increasing the जो maximum benefit है that will get. ठीक है, ये seed treatment हो गया है, and these are the methods that you can see. And after that we can go for root dipping also. See root dipping इस तरह से एक फील्ड में ही एक तरफ छोटा सा हम लोग पॉन्ड टाइप का छोटा सा बना के, एक प्लास्टिक, एज यू कैन सी एक प्लास्टिक शीट उन्होंने डाला है, उसके ऊपर उन्होंने वाटर, एंड देन see here they have given the required quantity of azospirillum PSM mixed with 5 to 10 liters of water at one corner of the field, and the roots of the seedlings has to be dipped for minimum half an hour before transplantation. एक half an hour तक उसमें dip करके then they can go for transplantation. That also will increase the that utilization. एक और मेथड है सॉइल एप्लीकेशन. नाउ यू हैव टू मिक्स द इनोक्यूलेंट्स विथ farmyard manure, specifically or more preferably, I would not say specifically, preferably the farmyard manure that has been derived from the cow dung, along with half bag of rock phosphate if available, and then उसके लिए कितना पर acre 200 ml of PSM should be used. Okay,
So that much you have to take rock phosphate and everything. You have to mix it with soil as she is doing here. And now after this mixture is ready, इसको ओवरनाइट शेड में रखना चाहिए क्योंकि ये लिक्विड में है. सो दैट हैज टू बी लिटिल बिट ड्राइड, राइट. सो शेड में रखना चाहिए एंड 50% मॉइस्चर सो दैट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दैट वोंट डाई ऑफ दिस ड्राइंग. ओके. सो उसके बाद देन यू हैव टू यूटिलाइज इन द क्रॉप. डायरेक्टली क्रॉप में भी डाल सकते हैं या सॉइल एप्लीकेशन में भी हो सकता है. Now this is the table where you can find the kind of biofertilizer recommended for various crops, the method of application which is most suitable for them, and the quantity that should be applied. Again self explanatory, एक बार जरूर देख लीजिएगा, and if you have any doubts you can always reach out to me. Okay, hope it is clear. आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं मुझे, आई कैन सी दैट. कई बार ऐसा होता है कि आपको म्यूट करके रखा है. लास्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन में विल अनम्यूट यू. मीनवाइल इफ यू हैव एनी इफ आई आस्क यू एनी क्वेश्चंस, आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं. ठीक है. सो प्लीज एक टेबल ये देख लीजिए, ज्यादा टफ नहीं है. द ओनली थिंग मेजॉरिटी ऑफ देम, देखिए यहाँ तक पूरा सीड ट्रीटमेंट ही है, सीड और सीडलिंग ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट. जहां पे भी सीड ट्रीटमेंट आएगा इट वुड बी 200 ml पर एकड़ क्वांटिटी. जहां पे भी सीडलिंग आएगा 400 ml पर एकड़, सॉरी 500 ml पर एकड़. सॉइल ट्रीटमेंट में थोड़ा सा चेंज हो सकता है. सो प्लीज आप एक बार देख लीजिए. डेफिनेटली दिस वुड बी इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ योर बायो फर्टिलाइजर, स्पेशली लिक्विड फर्टिलाइजर्स का डोसेज फॉर वेरियस क्रॉप्स. ओके. कल हम लोग कंपोस्टिंग किए थे बट आई फॉरगॉट टू ऐड व्हाट यू विल से वर्मी कंपोस्ट. तो एक बार अब बेसिक डिटेल्स हम लोग देख लेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम. ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊंगे इसमें. सो वर्मी कंपोस्ट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑर्गेनिक डेब्रिस इनटू वर्म कैस्टिंग्स. लाइक हम लोग रेगुलर कंपोस्टिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द सेम विल बी डूइंग बट विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म्स. ओके. Now, which are nothing but the worm castings, the fecal matter that it, इनके coelomic cavity से पूरा गुजर के जो आता है, that will have that, addition of nutrients. So the castings contain high amounts of nitrogen, potassium, phosphorus, calcium, magnesium. And these castings contain 5 times the available nitrogen, 7 times available potassium, 1.5 times more calcium that found in good topsoil. Important. Okay. Now, worm castings can hold close to 9 times their weight in water. Okay, so it means उनका water holding capacity is very high. And wormy conversion or using earthworms to convert waste into soil additives is one of the best ways to deal with farm waste. बहुत सारा farm waste generate होता है. Why waste that? Why throw it away? We can go for wormy conversion or the wormy composting. So 1 kilogram of worms numbering about 600 to 1000 can convert 25 to 45 kg of wet waste per week. So yeah, the compost recovery is around 25 kg per week under well managed condition. तो मिनिमम भी देखेंगे तो 25 kg तो उनको मिलना है. 25 to 45 kg वेट वेस्ट अगर यूज करेंगे, लिक्विड एंड ऑल दैट, अगर ट्रैश सब कुछ निकालने के बाद भी वी कैन गेट एटलीस्ट 25 kg पर वीक. ओके, उतना तो रोटेशन में चलता ही रहेगा वर्मी कंपोस्ट. And the recommended rate of vermicompost application to the crop is 15 to 20% of the जो भी farmyard में जो भी use करते हैं उसमें इतना 15 to 20% you can go for vermicompost. And for vermicompost production, very very important, surface dwelling earthworms alone should be used. Because the earthworms which live below the soil, they are not suitable for vermicompost production. वो क्योंकि अंदर ही अंदर रहेंगे, they won't come up and down, which is very much required for rotation, उसका movement of the material, organic waste. ठीक है. And there are 3 kinds of earthworms or worms that can be used in vermicomposting. One is African earthworm, Ugrilis eugenial, red worms, Icenia fotida, and composting worms, Peronix excavators. Now these are the promising worms that can be used in vermicompost production. Either individually एक ही worm type of worm use कर सकते हैं, or all the 3 worms can be mixed together and used. Okay, and African worm is preferred over others, that is Ugrilis eugenial. मैं photos भी दिखा देती हूँ आपको. See, this is the African earthworm. This is the red wrinkle or the tiger worm. It's also called Icenia fotida. And this is the Asian worm,
पेरिनोनिक्स एक्सकवेटर्स। सो ये सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है, बेस्ट फॉर कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। व्हाई? बिकॉज इसका जो मल्टीप्लीकेशन है, रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई है। सो देयर बाय एट द एंड ऑफ द डे हमारा वर्मी कंपोस्ट होने के बाद भी विल गेट अगेन गुड नंबर ऑफ वर्म्स फॉर नेक्स्ट बैच ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही रहता है, बाद में इन्वेस्टमेंट कम रहता है। एंड मोर ओवर the time taken by this African earthworm for vermi composting, it is less, the time taken is less when compared to the tiger worms, the red wrinkles or the Asian worms. Okay, see, more young ones in the composting period we can get. So compost worms are not subject to diseases caused by any microorganisms, but they are subject to predation by certain animals and insects. Red mites are the worst, which you find in the soil. So wo thoda sa soil ko sterilization and all that, that should be done before using, with devoid of red mites, that should be used. And sour crop करके एक हो सकता है. What is sour crop? See, when it comes to this vermi composting, the CN ratio should be, कहाँ पे लिखा था मैंने, 15:1 1 सेकेंड, यस, CN रेशियो हमारा इतना होना चाहिए. रेगुलर कंपोस्टिंग के लिए 30:1, राइट? सो फॉर वर्मी कंपोस्टिंग द CN रेशियो इज 15:1 to 20:1. अब अगर ये नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा हो गया है, देन विल हैव दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल डिजीज और द सॉर क्रॉप. इसमें क्या है? प्रोटीन पॉइजनिंग, इट्स कॉल्ड एज प्रोटीन पॉइजनिंग. जब नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है, देन वी हैव दिस, पर्टिकुलरली दिस इज वेरी डेंजरस. हियर द अर्थवर्म्स, कंप्लीटली जब वो कंज्यूम करते रहेंगे, because of the over protein or the nitrogen in their bodies, there would be serious deformation of earthworms as their intestines rupture. मतलब string of pearls वो इस तरह से हो जाते हैं. earthworm normally इस तरह से रहता है ना, वो एक इस तरह से हो जाते हैं, and they would die, killing the worm itself many a times. So the maintenance of CN ratio is very, very important for protecting these earthworms during vermi composting. ठीक है. So protein rich foods produce greater quantity of acidic compounds as they break down, and if this acid is not neutralized and calcium supplied to your worms, then protein poisoning is inevitable. So उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा. So that can be done by adding enough calcium rich buffer to the bedding to neutralize this acid that is produced by the microorganisms that digest this nitrogen. So please be careful. इसका भी एक question आया था in one of the competitive examinations related to agriculture. That's the reason ये बिल्कुल highlight किया है मैंने. And this question was also asked in the exam, and this is what you can see, all the three kinds of earthworms. And whenever we talk about vermi composting, this is done in 5 phases. Phase 1 में क्या होता है? Processing involving collection of the waste, shredding, mechanical separation of metal, glass, ceramics, and then we store the organic waste. So पहले पूरा cleaning होगा उसका. Okay. Phase 2 में pre-digestion of organic waste for 20 days by heaping the material along with cattle dung slurry. Same regular composting का ही है, but after 20 days we'll introduce the worms. So this process partially digests the material and fit for the earthworm consumption. Okay, cattle dung and bioslurry may be used after drying. So थोड़ा सा, and wet dung should not be used for vermi compost production. यहाँ पे जो cattle dung slurry जो हम लोग बोल रहे हैं, that you cannot use, in wet condition. बिल्कुल उसी तरह से नहीं, they have to be first dried, then that should be added to the organic waste for pre-digestion. क्योंकि उसमें जो भी microbes होते हैं, that will help in partial digestion. So partial digestion जब होगा, it would be easy for the earthworm also to ingest and come out with the worm castings. Next आता है phase 3, preparation of the earthworm bed. A concrete base is required to put the waste for vermicompost preparation. Loose soil will allow the worms to go into the soil, and also while watering, all the dissolvable nutrients go into the soil along with water. जैसे कि ये bed हो गया, मतलब एक concrete bed, इसको नीचे भी they will have a slanting position and an opening here. So जब ये हम लोग organic waste, pre-digested organic waste mixed with soil will put here and we release the earthworms, तो उसे स्टार्टिंग में क्या होता है, दे जनरेट गुड मॉइस्चर ऑल्सो, वाटर भी आता है, ऑल दैट वुड कम डाउन एंड दैट वुड बी रिलीज फ्रॉम हियर. टाइम टू टाइम यहाँ से वो पानी निकाल देना चाहिए. देर बाय ये ड्राई कंडीशंस जो होना चाहिए, रिक्वायर्ड है,
that would be maintained here. Okay. Phase 4, collection of earthworms after vermicompost collection. Of vermicompost हो गया है. Now we have to remove that. How that would be removed? How the earthworms are removed? Generally क्या करते हैं farmers? जो wet dung होता है, they'll make the wet dung into balls. बड़े बड़े balls करके they'll release those balls into this vermicompost. तो उसमें क्या है, the earthworms get attracted to that. वो आके वो सारे उसमें चिपक जाते हैं wet dung में. So they'll remove that and wash that and separate the earthworms from that. And after that जो भी इसमें sieve करेंगे तो in that also they can get some vermicompost and that would be used. Phase 5, store the vermicompost in proper place to maintain moisture and allow the beneficial microorganisms to grow. Already इसमें microorganisms रहेंगे और थोड़ा सा grow होंगे तो enrich और हो जाएगा. Now when we talk about compost, vermicomposting, you have to see that 5 essential things that you need to follow. 1, and hospitable living environment usually called the bedding. जो इनका जो organic waste and all that, वो bedding बिल्कुल free of mites and all that should be there. वो careful लेना पड़ेगा. A food source, that is जो भी इनको जो organic material जो हम लोग use करें, that will be partially digested should be provided. Otherwise the earthworms cannot ingest the completely बड़े बड़े pieces ऐसे होंगे तो they'll not be able to take. Adequate moisture, greater than 50% water content, weight उतना ही होना चाहिए, not more than that. अगर more than that होगा तो obviously यहाँ से वो निकल जाएगा, तो बेडिंग जिस बेड concrete beds में वो कर रहे हैं. Adequate aeration, so aeration का भी openly अच्छे से सही करना चाहिए. Protection from temperature extremes, either too cold, too hot conditions, they might not survive, so that has to be taken care of. So proper shading etc. that has to be maintained. So 5 essentials they have to take care of while doing vermicomposting. Now when we talk about vermicomposting, you have to understand this is the nutritive value of the vermicompost. So as you can see here. Okay, so it's made 2 terms you have to remember. 1, vermiwash, and 2, vermiprotein. Okay, now vermiwash kya hai? It is a liquid extract produced from the vermicompost in a medium where earthworms are richly populated. So in simpler terms, जैसे vegetable crops है, ऐसे कुछ है, उनको they require this worm rather than vermicompost, that compost, we can use vermiwash also. How it is done? See, एक वो लेते हैं, मीन एक ड्रम टाइप का. ओके, इन दैट दिस इज द नॉर्मल सॉइल. ओके, एंड इन दैट वाटर विल बी फ्लोइंग फ्रीक्वेंटली. ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज हो सकता है एंड रेगुलर वाटर ऑल्सो कैन बी यूज. एंड इसमें सॉइल विथ गुड नंबर ऑफ अर्थवर्म्स. दिसमें एक लेयर, दिस इज अ रेगुलर सॉइल लेयर एक, and this is the layer where you'll have good amount of earthworms along with the soil. ये यहाँ पर वर्क करते रहेंगे. यहाँ पे sand, sorry, यहाँ पे gravel, okay, यहाँ पे sand, okay, like filtering mechanism, and coal also. In few cases coal pieces are also added because they act as a good adsorbents. And once this started flowing, पहले यहाँ से soils के through already water थोड़ा सा filter हो जाएगा. While passing through this bed, through this layer where the earthworms and the soil is there, the water will dissolve all the nutrients that are present in the worm castings that have been released by the earthworms, and through a series of filtering mechanism they reach down, and from here we can collect them in a bucket. Now this liquid that we extract, it is called as vermiwash. As I have said, इस प्रोसेस के लिए हम लोग वेस्ट वाटर भी यूज कर सकते हैं और द रेगुलर नॉर्मल वाटर ऑल्सो. इन ईदर केसेस you will get the vermiwash. Now this can be used as a fertilizer to the plants. Generally vegetable crops के लिए ये vermiwash बहुत useful होता है. So one thing. Second is vermiprotein. जैसे मैंने अभी बताया है कि once the vermicomposting is done, what will happen? We get that crop, right? The कई सारे worms we get, and when we use African earthworm हमें बहुत ज़्यादा worms आते हैं. Okay, so the excess worms that we get during the process of vermicomposting, they can be converted into vermiprotein. Vermiprotein is nothing but these excess earthworms can be fed to the poultry. Okay, so that is called as vermiprotein. So vermiwash, vermiprotein, they are the byproducts of the vermicomposting only, which can be used.
So this is the differences between the vermicomposting and the traditional composting. Vermicomposting 45 to 60 days, traditional composting will take more time. कभी कभी ये सही से मेंटेन करें तो even बहुत कम टाइम में they can be done. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे earthworms and microbes, ये only microbes. Nutrient higher enriched with nutrients, lower when compared to the vermicompost. Odor, less odor, better aeration, strong odor because of the anaerobic activity of the microorganisms. pH balance near neutral or plant friendly. Sometimes it can be too acidic or too alkaline if we are not doing it properly. हमने discuss किया था ना organic matter, decomposition, decomposing and all that. So based on that, if you don't take proper care, this can be. But here generally plant friendly, pH neutral रहता है. ठीक है, हमने लिक्विड फर्टिलाइजर्स का देख लिया है. ओके, एप्लीकेशन वी हैव सीन नो हाउ डिपिंग, सीड ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट. नो सॉलिड फर्टिलाइजर्स का भी एक एप्लीकेशन मेथड्स होते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड फर्टिलाइजर्स, इट कैन बी अप्लाइड इन 4 मेजर फॉर्म्स: ब्रॉडकास्टिंग, प्लेसमेंट, बैंड प्लेसमेंट एंड पेलेट एप्लीकेशन. ब्रॉडकास्टिंग, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, विल ब्रॉडकास्ट, एक स्प्रेड कर देते हैं क्रॉप में. It can be again of 2 types. One is a basal application and top dressing. Basal application वो है कि while we do tillage practices, even before sowing, we apply the fertilizer. Top dressing क्या है? After germination of the crop, when we apply the fertilizer in or we broadcast the fertilizer, that is called as top dressing. And placement क्या है? Plow soil placement. While we do the ploughing itself, along with plowing, जैसे seed कम fertilizer drill होता है, we are sowing the seed and 5 centimeters distance पे we are also applying the fertilizer. This is called as plow soil fertilizer. plow के साथ साथ, plowing के साथ साथ we'll be doing that. Deep placement, when we are going for deep placement, किस तरह से वो मैं दिखा दूंगी. Localized placement, बिल्कुल plant के पास में ही the application of fertilizer is done. This is a placement method. Band placement, in bands we'll do. Hill placement, generally this is done for horticulture crops. हर एक पौधे के लिए एक वो निकाल के they have to apply. Okay, localized placement and hill placement almost similar ही है. Row placement, in a row you have to apply the fertilizer. Pellet application, in pellets that would be applied directly to the soil. Generally ये paddy में होता है and root zone में इन pellets को apply करते हैं. ठीक है, ये है broadcasting. Basal application, as you can see here, this is a basal application. See, अभी तक plants sowing नहीं हुआ है and they are broadcasting. This is top dressing. After the crop has germinated, उसके बाद ऊपर से fertilizer डाल रहे हैं, that is top dressing. ठीक है, ये दोनों हो गया. Along with photographs, it is clear. Next आता है placement. Plow soil placement, deep placement. See, plow soil at the place at the bottom of the plow furrow in a continuous manner while the ploughing is done. Now each band is covered as the next furrow is turned. अब जब उल्टा घूमेगा, जब फर्रो ओपन होगा तो यहाँ ऑलरेडी जहाँ पे फर्टिलाइजर है वो ये सॉइल इसके ऊपर गिर जाएगा. देयर बाय कवरिंग भी हो जाता है साइमल्टेनियसली. डीप प्लेसमेंट एट डेप्थ ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर्स. जनरली पैडी फील्ड्स में अमोनिकल नाइट्रोजन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो है दैट वुड बी प्लेस्ड हियर. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लोकलाइज्ड प्लेसमेंट, जनरली वेरी क्लोज टू द सीड और द प्लांट. दिस इज डन. So these are this is a plow soil placement. As you can see, fertilizers इसमें डाले हैं ना. So एक तरफ से soil गिरेगा. Okay, when we do seeds chapter, in that I'll show you how it is done. किस तरह से वो pass होता है, how much distance between the seed and the fertilizer. Here just try to understand that along with the seed, while ploughing itself, the placement of the fertilizer is done. ये deep placement है. Generally इसके लिए इस तरह के equipment use करते हैं. इसमें जो pellets है वो डाल देते हैं, इधर पेलेट्स. और जनरल डीप प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, मड बॉल्स टाइप के, छोटे छोटे मड बॉल्स टाइप के, उसमें बीच में पेलेट टाइप का वो होता है यूरिया का, एंड मड बॉल्स दैट दे विल पुश हियर, एंड पुश करने से ये बिल्कुल नीचे एक होल करके दैट विल बी पुश्ड इनटू द सॉइल. एज यू कैन सी दिस पर्सन इज डूइंग. ओके, ड्रिलिंग.
कि ड्रिल करते हुए दे विल पुट द फर्टिलाइजर. दिस इज साइड ड्रेसिंग. यहाँ पे साइड से दे कीप ऑन अप्लाइंग. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा हिल प्लेसमेंट एंड रो प्लेसमेंट. बैंड प्लेसमेंट में हिल प्लेसमेंट एज आई हैव सेड जनरली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए होता है. एज यू कैन सी हियर, रो प्लेसमेंट along the rows it is done. As I have said, row placement and side dressing is almost similar only. Okay, next आता है pellet placement. Okay, now here the pellets in the form of pellets it is done. ये generally hand से होता है. जैसे हमने वहाँ पे deep placement देखा ना, उसी तरह से होता है. But here as you can see, fertilizer is mixed with the soil in the ratio of 1:10. So 1 fertilizer 10 soil. So बड़े बड़े pellets बना के mud से that would be pushed into the deep into the soil. थोड़े से रूट से थोड़े से दूर में. एटलीस्ट जब भी फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर रहे हैं इन द रूट जोन, ऑलवेज इट शुड मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द रूट जोन. क्योंकि इससे कम हो गया तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स विल इंक्रीज, देयर बाय हार्मिंग द रूट्स रादर देन हेल्पिंग देम. ओके, सीड्स में भी जब हम लोग देखेंगे व्हेन सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल में करेंगे तो सीड यहाँ पे एंड इन दोनों के बीच में मिनिमम 5 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस इज मेंटेन सो दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस फर्टिलाइजर वुड नॉट हार्म द सीड व्हाइल जर्मिनेटिंग. ओके, नेक्स्ट आता है लिक्विड फर्टिलाइजर्स. अगर डायरेक्टली अप्लाई करना है प्लांट्स को, वन कैन बी द स्टार्टर सॉल्यूशन. जनरली ये 1:2:1 रेशियो और 1:1:2 रेशियो में होता है. यंग प्लांट्स को डायरेक्टली ऐसे दे देते हैं स्टार्टर सॉल्यूशन. ओके, this is foliar spray. As you can see here, we'll use some kinds of spraying machine. And when we do agriculture engineering में we'll do types of sprayers and dusters. वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी different types of sprayers. So foliar spray करते हैं. Fertigation, through drip irrigation they provide fertilizers which is called as fertigation. Injecting it to the soil, generally ये बड़े बड़े trees के लिए होता है. And when anhydrous ammonia sort of this fertilizer is injected, then this is used. This is how injection is done into the soil directly. Aerial spray, here जो बहुत ही vast crops है and then minute quantities को भी हमें large areas में जब spread out करना है, then aerial spray can be used. As you can see here, this is done like this. Okay, so start जो liquid fertilizers हैं. सो यहाँ पे हमने 3 तरह के वो देखे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का सीड ट्रीटमेंट एंड रूट डिपिंग एक्सेट्रा. एंड वी हैव सीन द रेगुलर फर्टिलाइजर्स एंड उसके एप्लीकेशन. एंड देन वी हैव सीन द लिक्विड फर्टिलाइजर्स एंड उसके एप्लीकेशन किस तरह से होते हैं. होप इट इज क्लियर. अब ये टॉपिक कल करेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 7:15. इसमें हम लोग कल क्या करने वाले हैं, द मूवमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट नीड्स टाइम, मैं रश नहीं कर सकती. सो फिक्सेशन, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड ऑल दैट विल बी डूइंग इन द टुमारो सेशन. यस, नाउ द फोरम इज ओपन फॉर योर क्वेरीज, क्वेश्चंस एक्सेट्रा. यस, yes, any questions, any queries till now? Is it clear? Hello? No questions? Okay, students are already leaving, no problem. Tomorrow we'll continue with the rest of this topic along with the MCQs. So please don't miss the session tomorrow. तो एक revision type का हो जाएगा while we discuss the MCQs as well. क्योंकि half an hour to 40 minutes में ये cover हो जाएगा and rest 15 to 20 minutes will have good amount of questions that we can discuss. Hope it is clear. Ma'am. I hope, because I'm not getting any queries. So see you all tomorrow then. Thank you very much. You have been a great audience. Yes, B. Any question? अच्छा, muted B आप कहाँ पे हो? Let me see. मैं आपको unmute करूँगी. 1 second. Okay, ये आपका 1 second. Hello. हाँ, आपका हो गया unmute. You can ask me.
जी मैम, ये डिफरेंट एप्लीकेशन है तो ना फर्टिलाइजर का, तो इसमें अलग अलग फर्टिलाइजर सब में सब एप्लीकेशन में यूज होगा ना? सब सेम फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं? नहीं, अलग अलग फर्टिलाइजर, यस यू कैन मिक्स। अगर स्ट्रेट फर्टिलाइजर है तो जैसे हमने डिस्कस किया था, यू कैन मिक्स देम एंड यूज फिजिकली, वो भी हो सकता है। एंड अगर कॉम्पाउंड फॉर्म में है तो वो डायरेक्टली वैसे यूज हो सकते हैं। एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजर एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप यू कैन यूज इट। यस मैम, उसका कुछ रिसोर्स मिलेगा क्या? क्या क्या? आई डिडंट गेट यू बी। रिसोर्स जैसे लिक्विड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में यही फर्टिलाइजर को यस, यूज करना है सर? एग्जाम्पल? एग्जाम्पल आप देखिए, ये सारे पाउडर्ड फॉर्म में ही रहते हैं जनरली। एक सेकेंड, आप ये पूछ रहे हो ना कि ये फर्टिलाइजर्स हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, राइट? जी देखिए, मैम। हाँ सी, ये इनसॉल्युबल है, सो ये पाउडर्ड फॉर्म में ही आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ, रॉक फॉस्फेट या रॉक बोन मील या स्टीम्ड बोन मील, ठीक है। ये सिट्रिक एसिड सॉल्युबल है, सो एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर सिट्रिक जहाँ पे भी एल्कलिनिटी है इन सच काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन यूज दैट। ये बोन मील है, सुटेबल फॉर एसिडिक एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, सो ये सिट्रिक एसिड में सॉल्युबल करके वो कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ये तो सिंपल वाटर में अप्लाई कर सकते हैं, और उसी पाउडर को आप डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और इफ यू वांट टू गो फॉर foliar application, then you can go for mixing it with water or citric acid as per their nature and then apply to the crop. Hope it is clear, B. As per the nature of the and availability of the fertilizer, you can go with any of the fertilizer application, either dried form or your liquid form. Hello? मैम, थैंक यू। Okay. Yes, anyone else, any question? That's the reason मैं सारे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। आप रिवीजन करके, आई मीन जब भी आप पढ़ोगे, मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि उस टाइम पे डाउट्स नहीं आते हैं। व्हेन यू गो थ्रू द कंटेंट सेपरेटली यू विल गेट लॉट ऑफ डाउट्स दैट वी विल डिस्कस इन द क्लास। Okay, since I'm not getting any queries as such, I'm winding up the session. Thank you very much. Please take good care of yourself. Bye bye. Good night.